Good morning, students. Today we are going to learn Chapter 6, Part 1, Data Editing and Formatting in Kelsey. I have made you introduced with Chapter 5, the introduction of Kelsey, different parts of Kelsey, and the working of Kelsey. Today we are going to see the editing and formatting in Kelsey. Kelsey is similar to Excel, children. Okay. Now, children, we will see the basic worksheet operations in Kelsey, like creating a new document, saving the changes in the document before closing it, opening an existing document like searching and opening a document, okay, and rest other operations. First we will see creating a new document in Kelsey, as you have done in 9th standard and you have done in Excel also, MS Office Excel. So Kelsey is similar to MS Office Excel. Kelsey is open source program, right? When you open the OpenOffice org Kelsey application, it will automatically open a new Kelsey document. If you have already used the document and wrote some data in it, you may open another new spreadsheet document. To open a new Kelsey document that is a Kelsey spreadsheet, perform the following procedures, children. Where we will go? We will go to the file menu, okay, in Kelsey screen, here in file menu, then we will select new option, new. In new we will select spreadsheet, okay, got it. And from the menu bar we will select the file, in file new, in new spreadsheet. Then even we can press Ctrl plus N, or we can say click on the new document icon. Here, children, you can see this, okay, on the toolbar at the top of the screen, and select spreadsheet. The icon and encircled will look as shown in figure 6.1. This one, children. I hope you got it. Now, after the new document, we are going to start with opening an existing document, okay, which is already prepared or which is already made by you. We want to open that document or open that file. An existing Kelsey document can be opened in multiple ways. The first way is to open the Kelsey. First, to go to the file menu and select open, right? Give this command sequence. Select file menu, in file, say open. In the open dialog box, select the file which you want from the default folder or any other specified folder. Then complete the action by clicking on the open button. You will get the dialog box, children. You have to select the name of the file and then you have to click on open button. Another alternative is first to find the required file from computer, then open it with the Kelsey software as follows. Open the folder. Which folder? Document folder. And by choosing places, you will click documents and required spreadsheet file will be opened, okay. Here you can see, children. Still, if you can't find your file by performing the steps mentioned above, you can find the file through search utility of Ubuntu. The utility is helpful. Yes, search utility or search option is helpful, especially when you do not remember the location of the file. To do so, perform the following action. सर्च हमें कब काम आता है बच्चों? सर्च बार, जब हमें हमारी फाइल की लोकेशन याद नहीं रहती, हमने कहाँ सेव की है, ओके. For that, in Ubuntu, we will go to select places option, and in places we will go search for the file. Here you can see, children, places in Ubuntu after application, which is similar to start menu. ये Ubuntu का desktop है बच्चों, okay. Then after application, the next tab is places. In places we are having search for the file, right? जैसे ही हम सर्च फॉर द फाइल क्लिक करेंगे, इट विल ओपन दिस डायलॉग बॉक्स.
here we will write the file name. Okay, ये कहाँ कहाँ ढूंढ सकता है, आप उसको ऑप्शंस दे सकते हैं यहाँ. Got it? And then after it you ask it to find. Understood, children? See, when you click search for files, a dialog box appears asking for the file details. The details include name of the file, folder in which the file is to be searched, and some content within expected file. We can also search file by specifying some dates like last modified date. हमने उस फाइल को कब लास्टली ओपन किया या उसे मॉडिफाई किया, हम वो डेट भी दे सकते हैं बच्चों. ठीक है. सो सी ब्लॉक एरो pointing to the dialog box. See here. Okay, this is the dialog box for search operation of the file. In the name contains field or search for file dialog box, enter a full or a part of the file name. Click on find button here. Okay, here in the name we have to write the file name which we are going to search for. Now these steps are illustrated here. It will show a list of files as a result of search operation. To open a file, double click on required file name. ये सेम टाइप की फाइल्स ओपन करेगा बच्चों. माई बिल नाम की जितनी भी फाइल्स होंगी, माई बिल 1, माई बिल 2 लाइक दैट, जो फाइल हम सर्च कर रहे हैं उसका नाम है, वो उन फाइल्स को ओपन करेगा और आप उसमें से एक्सपेक्टेड जो आपकी फाइल है ओपन कर सकते हैं. गॉट इट स्टूडेंट्स? नाउ सेविंग वर्कशीट इन डिफरेंट फॉर्मेट्स. हम अपनी फाइल को या वर्कशीट को कैल्सी की अलग अलग फॉर्मेट्स में सेव कर सकते हैं. हियर आर द डिफरेंट फॉर्मेट्स आर गिवन. ODF फॉर्मेट जिसका एक्सटेंशन है ODS, ये कैल्सी का फॉर्मेट है बच्चों. देन ODF स्प्रेडशीट, तो इसका एक्सटेंशन OTS है. ओके, ये कैल्सी टेम्पलेट है बच्चों. DBase, सो DBF टेक्स्ट CSV. देन HTML डॉक्यूमेंट, दैट इज़ HTML वेब पेज फॉर्मेट में. पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट मीन्स PDF में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्मेट, दिस इज़ यूनिवर्सल अबोट फॉर्मेट, अडोब फॉर्मेट फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट. नाउ Excel 2007 और XML, सो वी कैन सेव द फाइल विथ एक्सटेंशन XLSX जो कि सेव करेगा फाइल को MS ऑफिस स्प्रेडशीट 2007 और 10 के फॉर्मेट में. देन Excel 2003 इफ़ यू गिव, तो इसका जो एक्सटेंशन है XLS है, सो वो उसे 2003 MS ऑफिस 2003 के फॉर्मेट में सेव करेगा. आई होप यू गॉट इट स्टूडेंट्स. वी गो टू द नेक्स्ट. नाउ यू कैन सी हियर चिल्ड्रन द डिफरेंट these arrows on icons means making the shortcuts of the files. You can see children, arrows on the icons. Okay, these are the shortcuts of the files. Now creating shortcut. For creating shortcut, which item or which topic or which folder you want to get it or you want to create as a shortcut. So this wizard create shortcut will help you to create shortcuts to the local or network programs, files, folders, computers or internet addresses. Got it? So type the location of the item and click browse. If you don't know, so you can browse also and click next to continue children. For creating shortcut, browse or file or folder, you can go to this dialog box children. Here you can see on the desktop we are creating the shortcuts for type, library, date modified. Here in library we are creating the shortcut. Okay, now to save a file in another format, to save the file, now go to the save. जैसे हमने पीछे कुछ फॉर्मेट्स देखे बच्चों फाइल सेव करने के, एक्सेल में, PDF में, एक्सेल में, या फिर कैल्सी के फॉर्मेट में, ODS में, ODT में. ओके, सो अनदर फॉर्मेट, अगर हमें फाइल को किसी दूसरे फॉर्मेट में सेव करना है तो गो टू फाइल एंड चूज सेव for unsaved document or save as option for opened already saved document. Open the file
type and circled here. You can see, children, got it? Now renaming and recoloring. हमारी वर्कशीट को नया नाम देना है. Okay, so we have to rename and plus we have to recolor the worksheet. In the previous chapter we have changed the name of worksheet by selecting a worksheet from status bar, right click करके and changing its name. If you have many worksheets in spreadsheet document, better to assign a suitable name and color for easy management of the document. To change the name of worksheet, perform the following action. हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है बच्चों? मान लीजिए हमारी स्प्रेडशीट प्रोग्राम में 3 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा या 5, 6, 7 वर्कशीट्स हैं, तो उन वर्कशीट्स को हम अलग अलग कलर या नाम में रीनेम कर सकते हैं ताकि हमें इजीली पता चले कि कौन सी वर्कशीट पे हमने कौन सा काम किया है. ओके, लेट्स सी. Now select any cell in an opened worksheet. Go to format menu, sheet and rename. In dialog box, rename sheet, enter the new name. You can see here, children. Okay. Then say, by giving the name, then say OK. Either click the right mouse button on the name of worksheet shown on the sheet tab and select rename. यहाँ पे आप राइट क्लिक कर सकते हैं माउस बटन को और आप रीनेम ऑप्शन में जाके आप उस वर्कशीट को रीनेम भी कर सकते हैं बच्चों. ओके, 2 ऑप्शंस आर देयर फॉर रीनेमिंग द शीट, दिस वन and this one and this one. Okay, any of the option you can select for renaming. Now go to appropriate sheet which you would like to rename. Select the sheet, must be highlighted with white background. Right click on the sheet and vertical menu appears, displayed here in 6.5. From the menu select rename sheet option. A new dialog box will appear and as shown in the form of rectangle in middle of the figure 6.5, children. Here provide the new name of the sheet. I hope you got it, children. You must have done it also. Changing color of the sheet, worksheet tab. To change the tab color of worksheet, we just need to right click the worksheet name and choose the command tab color. From the vertical menu appears as shown here on the image. We need to select an appropriate color for the tab from the color choice presented to us. Here you can see, children. Okay, right click on the sheet and then tab color. Okay, and this dialog box will appear and you can change the color of your worksheet tab. Now inserting new worksheet, we have two. You can see, children, here 3 different colors. Okay, now we have to insert a new sheet. Sheet 1, 2, 3 are already given. Still we want to insert. For that we will go to insert menu. See here. Okay, and there we will select sheet. For that sheet, it asks us the position of the sheet, right? Before current sheet, जिस sheet पे हम काम कर रहे हैं उसके पहले या बाद में. New sheet, understood? Now we go to, children, deleting a worksheet. Deleting a worksheet like हमने 3, 4, 5 number of the sheets we have created, but अब उसमें से कुछ या कोई एक sheet हमारे काम की नहीं, so we have to delete it. We can delete one or more worksheet in Kelsey. To delete a single worksheet, right click on the sheet tab of the worksheet you want to delete. It will give you a list of possible actions. Delete sheet option, you have to choose from the given choices. Alternatively, either you can go to edit menu, in edit sheet, sheet में जाके delete option. I hope you got it, children. अब row और column. Okay, because Kelsey is a collection of the rows and columns, right? It's a tabular format. So अब हमें कोई row और column delete करना है बच्चों. Same way, we will go to specific row which you want to delete. Right click on the row, select the delete rows option. मान लीजिए रो नंबर 6 मुझे डिलीट करनी है, तो वहाँ पे मैं राइट क्लिक करके I will get this menu. Okay,
and from these options I will select delete row. It will delete the row. या तो फिर हम एडिट मेन्यू में जाके भी डिलीट सेल कर सकते हैं. ओके, दिस इज डिलीट सेल, डिलीट कॉलम्स, डिलीट रोज. गॉट इट चिल्ड्रन? नाउ वी गो टू सेल लेवल ऑपरेशंस. अब सेल लेवल ऑपरेशंस मीन्स पर्टिकुलर सेल पे हम क्या क्या काम कर सकते हैं. टू सिलेक्ट a range of cell first. To select a cell range, go to the first cell using mouse and left click on it. After selecting the first cell with the left mouse click, without releasing the mouse button, drag the mouse pointer over the cells. Highlight it properly. Then release the mouse button. This is applicable to adjacent cell, connected cells only. If cells are not physically connected or adjacent to each other, you need to hold down the control key. अगर मान लीजिए आपको सेल नंबर 2, 4, 6 सिलेक्ट करने हैं तो आपको कंट्रोल की प्रेस करते हुए कंटिन्यूसली बिना कंट्रोल की को रिलीज़ किए आप सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हो, रैंडम सेल्स को. टू सिलेक्ट ऑल द सेल्स इन अ वर्कशीट यू जस्ट नीड टू क्लिक द बटन इन द बिगनिंग. और वर्कशीट के सारे सेल्स, नॉट रैंडम, ऑल कॉन्जिक्यूटिव सेल्स इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट. सो आपको क्या करना है, जस्ट क्लिक द बटन इन द बिगनिंग ऑफ द रो एंड कॉलम हेडिंग्स. तो सिलेक्शन रेंज कैन ऑल्सो बी स्पेसिफाइड बाय गिविंग रोज एंड कॉलम रेफरेंस सच एज A1 से लेकर B12 तक इन एड्रेस बॉक्स. तो आप उधर इस तरह से भी सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं. यू कैन कैंसल द सिलेक्शन ऑफ सेल और अ रेंज, or you have to do this in left click or cell using mouse. Got it, students? Now delete the contents of the cell. हमें क्या कंटेंट डिलीट करने हैं? Select the cell or range of cells. Okay. Then after press the delete key. सेल को सिलेक्ट कीजिए या सीरीज ऑफ द सेल है, मान लीजिए रो 1 के ABCDEF तक आपको सेल या G तक आपको सेल सिलेक्ट करके डिलीट करना है उसका कंटेंट. तो उन सबको साथ में सिलेक्ट करके यू कैन डिलीट, प्रेस डिलीट बटन फ्रॉम द कीबोर्ड. ओके, गिव योर चॉइस बाय क्लिकिंग. इफ़ यू वांट टू डिलीट टेक्स्ट देन क्लिक टेक्स्ट. यू मे सिलेक्ट मोर ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन डिलीट कंटेंट्स में से एंड यू हैव टू प्रेस ओके. यू कैन सी चिल्ड्रन, जैसे ही आप डिलीट ऑप्शन को क्लिक करोगे, okay, so this will give you text, number, date, time, notes, formats, objects, and then you have to select okay. Now choices. delete all अगर हम प्रेस करते हैं बच्चों तो delete entire cells, entire content of the cell और cell range. text तो सिर्फ ये text को ही delete करेगा. okay, numbers तो सिर्फ numbers को delete करेगा उस डेटा सेल की रेंज से जो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट या हाईलाइट करके दिए. डेट एंड टाइम तो दिस विल डिलीट डेट एंड टाइम. फॉर्मूला तो डिलीट फॉर्मूलाज एंड आउटकम्स फ्रॉम द सेल विच इज़ ऑलरेडी सिलेक्टेड. नोट्स तो डिलीट नोट्स फॉर अ सेल इफ एडिड. फॉर्मेट्स डिलीट सेल फॉर्मेटिंग बट कीप्स द डेटा. ओके, देन फॉर्मेटिंग इन द सेंस आपने डेटा को हाईलाइट किया है, कलर दिया है या फिर आपने उसके फॉन्ट चेंज किए तो वो उसे बाय डिफ़ॉल्ट में लेकर आएगा और डेटा रखेगा पर उसकी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को डिलीट कर देगा. नेक्स्ट लास्ट इज ऑब्जेक्ट्स. डिलीट एडिशनल एलिमेंट ऑफ द सेल सच एज इमेजेस. गॉट इट चिल्ड्रन? द डिलीट ऑपरेशन एंड इट्स डिस्क्रिप्शन. नाउ वी गो टू एडिटिंग द सेल कंटेंट. To edit the content of the cell, edit means to make modifications or changes. Just select the cell and double click with mouse and edit the content. When you finish, press enter key. It's so easy children. You must have done it also. To edit the content of the cell, just select the cell, double click with the mouse. Okay. Now copying and moving the cell. Cell को copy करना या move करना. Cells in spreadsheets can contain many things such as number, text, formulas, formats and references to other cells. The content of cell can therefore be complex, consisting of many values. To copying a cell,
a worksheet or a range of cells. So do the following. Select the cell or cell range, okay, and worksheet that you want to copy. Now go to edit menu, click on copy option. You may select the cells with right click on it, and which you select the copy option, copy data will be highlighted with dotted rectangle. जिसे आपको कॉपी करना है वो कॉपीड डेटा के चारों तरफ उसके सराउंडिंग्स में एक हाईलाइटेड डॉटेड रेक्टेंगल आ जाएगा बच्चों. सिलेक्ट द पेस्ट लोकेशन एंड परफॉर्म द पेस्ट ऑप्शन और पेस्ट कमांड. अब पेस्ट करने के लिए इफ़ यू वांट टू एडिशनल पेस्ट ऑप्शंस पे आपको जाना है तो गो टू एडिट मेन्यू एंड सिलेक्ट द पेस्ट स्पेशल ऑप्शन. ओके चिल्ड्रन. अब बात करते हैं ऑटोफिल टूल. दैट यू नो कि इफ़ यू हैव टू राइट नंबर्स 1 to 100, so you will write 1, enter 2, enter 3. This way it will take a lot of time. What we want magically it should be done. Or you want to write January, February, March, April, or you want to write the table of 12 or anything which has to be gone in a long series. For that we use autofill tool. Okay, to automatically fill data into the cell automatically, and this autofill tool is used. Perform the following steps. Enter the number in a first cell, enter the number in a next cell, let's say 1, then 2, next cell horizontally or vertically, up to you, your choice. Left click on the handle in the cell. Okay, then afterward, without releasing the mouse button, drag across desired cell range. Release the mouse button, you will find it out. See here, I have given in this cell 6, then 7. Okay, but down, this is before the autofill, this is after autofill. 6, 7, 8, the counting goes on. Here we select the children. This is autofill small checkbox, by which dragging, selecting both the cell and dragging this small check button further, it will away until you don't release the mouse. Okay, until you release the mouse it will take the counting, go on. Same way you can see children here, autofills fill the data in cells. Okay, so numbers as mentioned above is also known as the arithmetic progression. 1 2 3 4 जो हमने देखा उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. यहाँ here we are filling Sunday, Monday, Tuesday. So I have given in first and second range, second cell range, Monday, Sunday and Monday, then selecting this small checkbox, right, dragging it up till where you want. So you can see the autofill function done over here in the second image. Autofills of numbers as mentioned above is also known as arithmetic progression. Try the arithmetic progression in different ways as follows. Write in odd number, say 1 in a cell, then its adjacent cell, successive odd number here. The next odd number is 3. Select both the cell together and try autofill tool. To fill next 10 cells, observe the number will filled automatically. Are they all odd numbers children? Yes, 1, 3, 5, 7 and till the last 10th number. Try different series 10, 20, 30 and so on, 25, 50, 75 so on, 2, 4, 5 so on. You can create number tables also. 1 multiplied 1 is equals to 1, 2 multiplied 1 is equals to 2. If you have only one single number in a cell and you try autofill tool, with it you may have list of number increase by 1. Got it children? Well, I just stopped this session part 1 of chapter 6 here children. I hope you have enjoyed. Please keep your textbook opened and also refer your textbook while you are watching the video. Clear your doubts if you have, and we will see you next session. Till then, thank you. Do have a good studies children. Have a good day.